friends, hello guys, welcome to my sweet little happy kitchen. See, these all I have done it myself. Like I bought it from Flipkart, this wallpaper, and I stick it on my own. These also. So, hi. So today we will be making chicken soup. So for the ingredients for chicken soup, what I have taken is this is cauliflower, this cabbage, this is corn, this is coriander, and this is garlic, lemon. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है ये पत्ता गोभी, कैबेज, कॉर्न, धनिया, लहसुन, नींबू और ये पेस्ट। और यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल किया था, तो इसका मैंने ब्रॉथ ले लिया है एक कटोरे में। और थोड़ा चिकन को मैंने इस तरीके से 2 फोर्क से ये पूरा चिकन निकाल लिया है। वो बॉइल्ड चिकन है, तो उसको मैंने दोनों चम्मच के हेल्प से, स्पून के हेल्प से मैंने ऐसा इसको दोनों चिकन को ऐसे निकाल लिया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो फर्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे बटर। सो मैंने बटर यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये गार्लिक। इसको हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि बटर मेरा मेल्ट हो जाए। सो नाउ आई विल पुट गार्लिक एंड बटर इज मेल्टेड। मैंने यहाँ पे आई हैव टेकन कैबेज एंड कॉर्न, बस इतना ही। यू कैन टेक इवन कैरेट एंड बीन्स, वो सब भी आप ले सकते हो। कैरेट को थोड़ा ग्राइंड कर सकते हो एंड बीन्स को थोड़ा पतला पतला जैसे नूडल्स में डालते हैं वैसा कट करके डाल सकते हो। तो इट्स योर विश, मतलब हाउ मेनी वेजीज यू वांट टू ऐड, और इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड, like for if you are making veg soup you can take all the veggies, and for chicken soup you can only take chicken. Like it depends on you, like how many you want to take or you don't want to take, it is totally up to you. So ये ऐड करने के बाद मैं ये थोड़ा सा पेस्ट ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का। अगर आपके पास घर का बना हुआ पेस्ट है तो यू कैन ऐड दैट टू। थोड़ा सा मैंने ये पेस्ट ऐड कर दिया है। ऐसे मिक्स कर दूँगी। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, व्हेन द कलर इज चेंज, थोड़ा इसमें ये सब डाल दूँगी, वेजीज डाल दूँगी। ये चिकन भी डाल दूँगी, जो मैं ये चिकन निकाल कर रखी हूँ। आई पुट दिस ऑल्सो। जस्ट थोड़ा सा वी विल मिक्स कर देते हैं। नाउ वी विल पुट दिस पेपर पाउडर एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो अगर जिसको बहुत स्पाइसी पसंद है दे कैन पुट ग्रीन चिली और रेड चिली, बट वी डोंट ईट सो मच स्पाइस, सो आई विल पुट ओनली दिस पेपर पाउडर। दैट विल आल्सो ब्रिंग अ लिटिल थोड़ा सा तीखापन, एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा देर ऐसे चलाएंगे। थोड़ा हाई कर लेंगे, हाई करके थोड़ा चलाएंगे।
बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। आई मिक्स दिस कॉर्नफ्लोर इन दिस चिकन का जो ब्रॉथ है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे उबाला था। सो आई टुक दिस। सो यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। 1 spoon I have added cornflour with this spoon, next spoon, and mixed in the chicken broth. Now we'll come to this. See, अच्छे से ये भुन चुका है। So now what we'll do, we'll put this coriander. अब थोड़ा सोया सॉस एंड वाइट विनेगर। सोया सॉस मैंने डाल दिया है। नाउ आई पुट वाइट विनेगर। विल मिक्स इट वेल, एवरीथिंग, सॉस एंड ऑल। विल मिक्स एवरीथिंग। And now once you mix everything, then we'll put this in this. Now you can see I have put the chicken broth also. Mix the corn flour in that only. Put everything here. Now slowly just stir it. It will come to slurry nature. Once it comes to slurry nature, we'll just close the gas and we'll serve it. See, now it has come to slurry nature. So yummy. I can't wait to have it. ये मैंने लेमन रखा है. I'll just put this. You know. So this is ready. We'll, after like putting lemon, we'll just close it because this is ready to serve. So now it's time to taste. This is so yummy. This is so tasty and so easy to make. If you want, you can add more pepper powder, salt according to your taste. If you want, you can add chilies. It is all like, it's on you, but it's very tasty. Please आप लोग try करो. बहुत easy recipe है. Don't waste your money going to restaurants and have this. It's very simple and easy to make. And also please like my channel. Please like my channel, subscribe my channel, and do comment on my recipe कि आपको कैसा लगा. Bye.